फील गार्डन गार्डन लग रहा है. Good morning everyone from Hamren. It's raining right now and we are going for a picnic. That is our car. I'll meet you all at the spot. Bye bye. Hello again. We are right now at Dongka Market. We are waiting for our friend. दो गाड़ी तो चला गया है आगे में, तो हम लोग अभी पीछे में है. तो इधर से हम लोग खेरोनी तक जाएगा. खेरोनी से we'll go to कोका. कोका is our final destination. और बारिश भी बहुत दे रहा है अभी. पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. उधर में खाना भी बनाना है. I have to save my battery. Okay, bye bye. I'll see you there. क्या क्या नाम है? हमरेंग. हमरेंग. वो वाला ब्रिज और ये वाला नया ब्रिज. हमरेंग. अभी तो पानी इतना अच्छा नहीं है. बारिश के वाह, इतना सुंदर है. वेलकम टू कोका. पहुंच गया. क्यों नहीं गेट बंद है? आईकार्ड लेके आना चाहिए हमको. इधर से तो एंट्री गेट. कितना लेता है एंट्री गेट? 200. 200. जाओ. फॉरेस्ट तुम्बा नहीं बोलो. पहुंच गया. इधर टिकट. अभी 9:43 AM. अभी कितना दूर जाना है? ज्यादा नहीं. ये पूरा जंगल पार करना है. वो तो दिखाई दे रहा है. कोका कोका. और चलाओ कोका. ये होता है उधर से चले दो लोग. वाइब. Tapos sige mama. कोका. इनवाइट करने तो सीधा पूरा. Latong kumatong na yung to. मम्मी एक्साइटेड? Oh, excited. नहीं क्या? आप पहुंच गया ना, और कितना पहुंचेगा? थोड़ा पैर कदम रखना है. ठीक है. How is the Jaws? फील गार्डन गार्डन लग रहा है. रास्ता तो खाली আছে তো না ইমান দিয়া নয়. So finally we reached Koka. It took us around 2 hours from Hamren to reach Koka. And morning से अभी तक बारिश दे रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रास्ता अभी कैसा है. तो पता नहीं अभी क्या होगा. हम लोग जगह देखेगा, उसके बाद we'll arrange our things and then we'll keep recording and you guys keep watching. We reached Koka. चलो चलो चलो. So finally, after planning for days and days for today picnic has finally over, and just look at the view guys. It's so surreal. It's really a hidden gem in West Karbi Anglong where peace and nature plus this rain blends so perfectly, just like the way we see in photos and videos. My heart feels so warm and happy seeing this breathtaking view, and I still want to come again and again just to see this beautiful view. And I feel so excited and also happy just by even editing right now. So hello again. After seeing all the places, we finally come to a decision to stay here and make some breakfast and also cook food. So for our breakfast we will be having some bread with jam and butter and also with red tea. I have muted this video because there was a song going on in the background. I'm just afraid that there will be copyright, so I'll just mute it. वो तो है. 50 টাকা. Yes to no hobo. This is 500 আছে. egg boil for breakfast. Egg boil and bread. बोलेगा वो बोले. आप दो कम है. कुछ बोलो. Everyone are having breakfast. अभी के लिए रहने का जो पिएगा वो लेते हैं पिएगा. Breakfast. अंडा और bread. Brown bread. Brown bread. बनाना मिस किया है लेकिन नहीं मिला. भाग के आ रहा है.
अभी लड़का लोग बर्तन धोने गया है नीचे में। हाय, अभी हम नीचे जाएगा। बारिश दे रहा है। ओह माय गुडनेस, कितना सुंदर बारिश दे रहा है। उधर पे बोटिंग करने के लिए बोट बाद में जाएगा। Look at that waterfall. बारिश नहीं रुक रहा है फिर भी I'll still continue making the video because I wanted to make it a memory. I'm there in the video. Yeah. Let's make chicken. We have, what is this? Capsicum. Capsicum and tomato. एक काम करो आप, ये मेरा पकड़ के ये दिखाओ। अभी ऑन है क्या? नहीं, ऑफ करो। ओके Pura pronov dahil. बोलो कुछ। We're making chicken now, नहीं, broiler chicken. अभी garlic paste डालेगा। चिकन इधर पे बना रहे और दादा इधर पे काट रहा है। Gila hi kat Ren. Local language. खुश हो रहा है, फ्री आंसू आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख लिया है कि चिकन ब्रॉयलर तो बना लिया है और अभी बारी है ये पोर्क। दूसरा जगह में पोर्क बना रहे दादा और ये हम लोग का मास्टर शेफ और ये सर लोग पीछे में गाना भी गा रहे हैं। सब लोग बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हंसरोंग बनाने के लिए सब्जी वगैरह जो जो चाहिए काटा। उसके बाद हम लोग सब खाना खाया, लेकिन उसका वीडियो लेना भूल गया मैं। तो आज का पिकनिक के लिए पोर्क 2 आइटम बनाया, एक फ्राई और एक बम्बू में डाल के बनाया। उसके बाद लोकल चिकन भी है और ब्रॉयलर चिकन भी था। उसके बाद हंसरोंग है। उसके बाद यस सलाद भी था। तो सब लोग खाना खा के नीचे थोड़ा इंजॉय करने के लिए पानी में गया।